Hi, I'll tell you about my interview experience of IIM Lucknow, which happened on 23rd February, and I'll tell you about the whole process starting from the document verification to the end of the interview. So, watch the full video. The venue of my interview was Mumbai. It was in Dadar in a college which was related to hotel management. The reporting time was 11:30 and I was on time. So the process started, and the very first process was document verification. So there was some list of documents that were mentioned in the mail. So I was having all that. I got my document verified, and it took around 1.5 or 2 hours for everyone's document getting verified. And as soon as it ended, we were separated in groups, and we were distributed and sent to different floors for the VAT. And yes, then the second process starts. It was VAT. So we were sent to a room and we were provided with a sheet and a pen, and there were two instructors who gave us the topic, and the topic was quite interesting. I was happy because I was able to think about that. We were given around 15 minutes. It was 15 minutes. We were said to complete it within 15 minutes, and the word limit was 300 words. And the topic was growth and integrity are poles apart. I had a very good understanding of this topic, and since I was prepared how to write a good VAT, I could write around 300 words in that 15 minutes. And I was satisfied with my answers because I could give many real life instances in that topic. So yeah, and then we were all sent back to the reporting room again. Post that, they said that the interview is going to start, and they will call the name, and accordingly we have to go to the interview room. And there was a person who used to guide us and take us to the interview room. And before me, there were around three guys who gave the interview. And then finally it was my turn. I was nervous because ये मेरा best call था. But anyways, मैं गया वहाँ पे. As soon as I entered the room, I saw that there are two interviewers. One was in his mid-50s. He looked like he was in his mid-50s. And the other one was young. वो थोड़े young थे. So they asked me to sit. बैठा, और they were very welcoming, to be honest. They were smiling. They asked me for my file, और file देखते देखते one of the interviewer asked me to introduce myself. I introduced myself, और वो पूरा सुने अच्छे से, वो कहीं कट नहीं किए. And the second question arrived then. Why did you leave your job? Because I was in a senior position in my company before when I was working. So they were asking कि छोड़ने का ज़रूरत क्या था and how MBA will help you. I explained them why I left my job and how MBA will help me. It was a prepared answer, so yeah, they listened the full answer. And post that, one of the interview asked me, why sustainable management and not any other popular management course. So the thing is, मुझे IIM लखनऊ से सिर्फ sustainable management का कॉल आया था, and therefore they were more focused toward the sustainable part. I answered that because it was a prepared answer, definitely. And post that, they gave me few scenario based questions कि अगर आप इस कंपनी के CEO हो और इस इंडस्ट्री के CEO हो. Different type of industries they gave me, like कोई manufacturing है या फिर कोई IT है. तो how will you implement sustainability practice in that particular industry or the company? तो ये चला कुछ 5-7 minutes, and I explained them whatever I could think of, और जो भी मैं पढ़ के आया था. Post that, they asked me कि what is ESG, and they asked me to explain it. ESG basically environment, social and governance. ये एक कंपनी को रिपोर्ट देना होता है इसका हर साल. तो आई वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग. आई कुड एक्सप्लेन दिस. पोस्ट दैट,
they asked me, are you aware of the syllabus of this course? ये मुझे आइडिया था कि ऐसा कुछ पूछते हैं उन लोग कि MBA में जो पढ़ाएंगे सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में, उसका कुछ आइडिया है. तो आई ऑलरेडी सॉ दिस थिंग बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू. तो मैंने बताया जो मेरे को पता था. पोस्ट दैट वो पूछे मुझसे, आर यू इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक के बारे में. फिर कुछ क्वेश्चन पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब. तो गाइज आई जस्ट वांट से यू वन थिंग कि स्टैटिस्टिक के बारे में ऑलमोस्ट हर IIM और हर IITs में मुझसे पूछा गया है. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड नो द बेसिक्स, एंड जितना अच्छे से स्टैटिस्टिक हो सकता है उतना पढ़ लेना चाहिए. दिस इज जस्ट अ सजेशन. इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द वन ऑफ द इंटरव्यूअर. द फर्स्ट इंटरव्यूअर वॉज व्हाट अदर्स कॉल डू यू हैव. मैंने बताया उनको कि कैप का कॉल है, कुछ IITs के कॉल है, ये सब चला. एंड इसके बाद ही सेड दैट आई एम डन सर, ओवर टू यू. आई सेड हिम थैंक यू. और फिर नेक्स्ट इंटरव्यूअर आते हैं एंड ही सॉ माई फाइल अगेन एंड ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ एफिलिएटेड मार्केटिंग. ये मुझसे इसलिए पूछा गया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है एफिलिएटेड मार्केटिंग में. सो आई टोल्ड हिम वॉट एवर आई न्यू. उसके बाद ही आस्क्ड मी कि व्हाट एक्सपीरियंस डिड यू एक्चुअली हैव इन दिस फील्ड. तो मैंने बताया उनको कि हाउ आई स्टार्टेड, हाउ आई मेक मनी थ्रू इट, what are the programs, how I am associated with Flipkart or Jio and Amazon for this marketing practice. So now this point of time he seems quite interested. I think so he was more curious about what actually this field is and how people are making money through it. मैंने बताया उनको, काफ़ी सारे सिनेरियोज बताए और एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया. Now when this thing was done, he went to the another question. Tell me what kind of business you want to build and how will you implement that. ये क्वेश्चन में से इसलिए पूछा गया था बिकॉज जब आई वॉज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उसमें मैंने लिखा था कि आई एम मोर इन टू क्रिएटिंग अ बिजनेस दैट इज़ फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी. तो फिर वो पूछने लगे व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज़ दैट, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट. तो एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि व्हेन वी शेयर अ प्लान, वी जस्ट not have to share a plan, but we also need to have the roadmap of how we will proceed it and how we will actually build that. तो ये एक चीज़ था that मैं point out किया कि ये expected था उनसे. और फिर ये जब मैंने पूरा समझाया, they asked me another question, how will this course be helpful to you. तो actually ये डॉट कनेक्ट करने थे मुझे कि मैं जो बिज़नेस बनाऊँगा उसमें ये कोर्स कैसे काम आएगा. तो ये मेरे मेंटोर ने मुझे एक्चुअली बताया हुआ था. तो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दैम हाउ दिस कोर्स वुड हेल्प मी इन माई अल्टीमेट गोल. उसके बाद कुछ डिस्कशन हुआ ऑन हाउ इंडिया इज़ एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी और गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाउ इज़ गवर्नमेंट प्रमोटिंग दैट. ये सब थोड़ा डिस्कशन हुआ छोटे टाइम के लिए. एंड सब होने के बाद दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैव एनी क्वेश्चन. So there was a prepared question that I asked them और अच्छे से आंसर किए, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी स्वीटली आंसर किए वो. उसके बाद दे सेड कि राहुल वी आर डन, थैंक यू, यू मे लीव द रूम. एंड देन आई लेफ्ट द रूम. फिर स्ट्रेस कम हुआ थोड़ा. बट व्हाट आई कुड फिगर आउट दैट जो इंटरव्यूअर्स थे दे वर मोर ओपन टू डिस्कशंस. उनको फैक्ट बेस्ड नॉलेज में उतना इंटरेस्ट नहीं था. वो मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस दे वर ट्राइंग टू लुक ऑफ माइंड. ऑल्सो दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स. मुझसे तो पूछे भी नहीं एक भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन. बट येस, काफ़ी जगह ऐसे भी थे वेयर दे वर कटिंग माई आंसर्स और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई आंसर मच. बट आई न्यू कि इस सिचुएशन में भी उतने ही एंथुजियाज्म और स्माइल रख के आंसर देना होता है. आई डिड दैट. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जहाँ पे आई कुड नॉट आंसर देम. आई सेड देम विद अ स्माइल, सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट. दे वर ओपन फॉर माई डिसएग्रीमेंट और ठीक थे. वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर्स नहीं थे. सो ऐसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा ऑफ IIM Lucknow. For more such videos and more interview experience, do like and subscribe the channel. Thank you.